start the session. Fine. So we completed that get method and second one on your lead method, right? So with these two STDP methods, what we have seen is how we can retrieve the data from Salesforce object, and then how we are using the web services, of course, and then with the web service, how we can delete the record. If it comes up with some of the parameters like the record ID, with some other thing, how we can delete that record. Let's now understand how we can insert the record inside the object. See, mostly, uh, what I have seen from my experience is mostly what I have used is the post method, because according to the requirements in the real time, we usually used to insert the record from any external resource. We capture the record and then we store that record inside the Salesforce. So mostly what I have used for my integration purpose was like HTTP post method. The second was the get method to retrieve the data, and then one more method was the put method. Put is actually used to update the record. So during the projects, what I probably have done 3 to 4 times, I have done the integration for different requirements, of course for different projects as well. So in my experience, what I have seen is mostly I have used with the get method to retrieve the data, post method to insert the record, uh, and then a put method to perform the updations in the existing record. But otherwise you should know everything. That is the reason we will be learning, like we already completed delete, and there's one more method, patch. Like patch is actually used to perform the upsert. Probably I can give you that in the assignment, because after performing insert and update with the post method, you are going to perform the insert operation with the after this post. I'm going to take this put method. So with the put method, you will be going to perform update operation. So a patch method would actually be a combination of insert plus update, right? It would be a combination with put plus post method. So that could probably I could give you in the assignment. If the time permits, I'm going to solve it. Otherwise, I'll give you that in the assignment. Anyways, so let's now understand ki if using the web services, if some external third party system is providing you a data, a data is coming from any third party system, any third party system. So how you can capture that data, how you can write a web service to capture that data and then store it inside the Salesforce object, right? Store it inside the Salesforce object. It could be any object, of course, standard or could be custom, whatever. So using how to write down a web service that could actually capture the data, okay, and this data should be get stored inside the object of the Salesforce. So that we are going to implement with a method called as post method. Okay. So mostly I have seen integration where we have used the post method and the get methods. Okay. Otherwise, I also have used the put method to perform the updation operation as well. Anyways, so let's go with this the use case. Here we will be, here we will be seeing two examples at least, so that how to insert a single record. Like with this example, insert an account record. That means a single account record, and then with probably the next example, we are going to see multiple records of the account type. Multiple records of hiring manager. So here we will be seeing if this is a case that is only a single entity, only a single record is coming. So how to write down the web service, and if the multiple records are coming, then how to write down that web service to handle the multiple records and then store it inside any of the object. So these are going to be two examples, right? So before we actually start with the method, first of all, understand the JSON payload. So this is going to be the JSON payload that we require to process. This is the request body, and this particular thing, what you are seeing inside, inside over here, that is something called as payload. And because it's in a JSON format, so we generally call this as a JSON payload. Okay. So your request actually consists of something called as JSON payload. Okay. And we require to write a web service in such a way that it should process this JSON payload, and at the same time, whatever the values are coming. For example, there's a field called as ACC name. The value Santosh Verma, ACC rating, ACC industry. All these are what? These are the keys, and these are the values. Some of the values are in the form of string, like this, like this, like this. Some of the values are in the form of number, decimal, whatever. Some of the fields, this is again in the form of URL. So how to handle that as well, right? And this we require to complete. Okay. One more thing I would like to say is yesterday I have performed one integration, and I have done it onto this particular org itself.
So I have shared you one of the code yesterday. Have you tried to do this? Have you tried to do this? Yes or no? I shared this example, like how we can consume. We have done two examples for that. If we wanted to consume some of the web service, and we have done that postal pin code API, and the second one was like your weather map API. So actually yesterday I was just surfing and I got one link as well. So I created a class for that as well, and this was this was the class what I have shared to you. And this is a controller class and required you to create this class as well. And I have shared you that yesterday, by the way. So had anyone tried with that? Had anyone tried with that? So, okay, you are still yet not right. Anyways, not a problem. But no, let me show you what I have built up, so that you just got an idea, and then you can perform it by yours. So let's go to the Visual Force page. I created a page called as Search University page for that. Okay, Search University page. And here, like I built up a similar kind of interface what you have built up for your postal pin code API. There you were asking the user to enter the pin code. Here we are asking the user to enter the country name. Code is even the same code is almost same like the kind of what we develop for your postal pin code API. I similarly have developed one of the user interface for that. Okay. We are asking the user to enter the name of the country, right? And before that, let me show you like how we started. So we always started with this by creating an endpoint URL, right? So we always stored it inside a remote site setting. Let me first of all discuss this security controls. And as in step number one, what you require to do is like you first of all add the current URL. So it was university. So this was the URL, right? This was the URL. Copy and paste it so that you could even do the same thing. So what you require to do is, guys, you first of all require to add it into your remote site setting. That's the very first thing. You could give any name for that. I have given this name university details, right? So what you require to do is like, first of all, create a remote site setting. That's your step number one. You know this. After that, I started coding my front end part. That front end is actually Visual Force page. So you can understand this code and everything. I have written this in the page one. This is one of the page block, the second page block. And if you see over here, what we do usually is like, what we usually do is like, we always, I mean, I capture the name in one of the variable country name. There's a variable. For example, if you are entering some name over here, so if you are entering some name, then that enter the name, yeah, input text. So I'm actually capturing it inside one of the variable called as country name. This is that variable country name where we are capturing what the user is entering. Okay. After that, after that, I created a list collection. Why? Because when we wanted to display something, onto the user interface, if we wanted to display it in the form of table, always remember this. I probably haven't told you that. I तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये नहीं बताया है. That's the reason I'm taking this once again. See, whenever you wanted to display the response in the form of a table, right? When you wanted to display the response onto Visual Force page, understand this thing. This is very important. So whenever you wanted to display the response in the form of table, if you wanted to display the response, so in your code, you should always take, because see, one second. Yeah. So when we are displaying the table, when inside your Visual Force page, whenever we are displaying a table, the table must have a property called as value. Table must have this thing, and the values should always come from a collection. Value should always come from a collection. So this type of responses, during this type of requirement, where you wanted to display the parameters, where you wanted to display the outputs in the form of table. So what you require to do is like, always create a collection inside your controller class. Always do that. Always do that. And this is going to help you out in the LWC as well. Same actually LWC में भी ऐसा होता है. The same is actually in the LWC as well. Let me try to show you that. टॉपिक पे आता हूँ मैं, डोंट वरी. बट व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, दैट्स वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो ट्राई टू शो यू समथिंग.
your LWC, Visual Force पे जैसा आप पढ़ो, that's a front end part. In the same way, the Aura components and your LWC component, they just, they just describe you the front end part. They just used to construct a front end part, right? So you can see over here onto this page, there's a tab called as matching. And the matching, I have actually created two different pages, or two different tables are there. The first table used to display the units value, the second one is used to display the clients, right? Let me try to show you something. Try to show you something. Let me try to show you something so that you would understand it. Okay. So, yes. Fine. That one. Yeah. So what happened is like on onto this page you can see there are two tables. First table is used to display the unit. The second is to display the client. Now understand one thing. Here also, although I created this front end with LWC, but my LWC is just serving me the front end part. Now in the back end, in the back end to get this all details, actually I have created list collections. So understand this fact that whenever this is your requirement that you wanted to display onto the front end, if you wanted to display the informations you wanted to display in the form of table, in the form of table like this. It have like name and then alpha code, whatever these, whatever like this. So whenever this is your requirement, you wanted to display the information onto the table. So your backend must have something called as collection. And whatever the values that we are adding into that collection, lst university.add details, right? This actually acts as a data source. This actually acts as a data source for this table. ठीक है तो ये थोड़ा सा याद रखना हमेशा याद रखना कि if in your front end whenever you wanted to display the records in the form of table with some name columns like that, so your backend must have something. The data source for this would always be a collection. It could be any collection, list set map, वो एक अलग बात है, but आपको backend में collection बनाना पड़ता है, yeah, for that. Okay, I mean I created a variable. ये एक temporary variable मैंने इसलिए बनाया because I wanted to check the response in between. मैं रिस्पॉन्स को चेक करना चाहता था, मैं रिस्पॉन्स को चेक करना चाहता था, दैट्स वाई। इसके पहले कि मैं आगे का पूरा कोड लिखूं, मैंने एक यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स जेसन नाम का एक वेरिएबल बना रखा था, ठीक है। ऑन व्हाट आई डिड इज लाइक मैंने उसमें जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स लेसन में आई एक्चुअली हैव कलेक्टेड द रिस्पॉन्स। मैंने दैट गेट बॉडी से मैंने उसमें रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लिया एंड देन आई इनिशियली आई प्रिंटेड दिस ऑन टू द विजुअल फोर्स पेज, ये देखने के लिए कि व्हेन यू एंटर समथिंग फ्रॉम हियर तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं, आपका एपीआई हिट हो रहा है या नहीं हिट हो रहा है, वो चेक करने के लिए। सो ये हमेशा कर लिया करो बिफोर यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द कंप्लीट कोड, राइट। पहले एक बार ये किया करो कि हमेशा ना एपीआई हिट करो, एक जगह रिस्पॉन्स को जमा करो और वो पर्टिकुलर वेरिएबल जैसे आपने यहाँ जमा किया उसको, वो पर्टिकुलर वेरिएबल को यहाँ पे लाके पेज ब्लॉक के अंदर प्रिंट कर लेना, सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड कि हमारा एपीआई हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी का चीज जो है वो सेम ही है। तो बाकी वैसा ही था, लाइक एचटीटीपी क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं, दैट्स अ बेसिक क्लास, उसका एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद में एचटीटीपी के अंदर इनर क्लास होती है रिक्वेस्ट, ठीक है, उसका एक वेरिएबल बना लिया एंड विथ न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल बना लिया। नाउ इसकी मदद से मैंने सेंड एंड पॉइंट्स पहले से कलेक्ट कर रखे थे, उसमें कंट्री नेम देना था अलग से। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंड पॉइंट है वो पहले से है, उसमें क्या ऐड हो रहा है, कंट्री नेम। कंट्री नेम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, विजुअल फोर्स पेज से आ रही है। इस तरह से वो सब कर लिया, ये सेम कोड है, इफ यू ट्राई टू सी दिस इज द सेम कोड। बाद में रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लिया और रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी, उसके बाद में उसको पास कर दिया, बस और कुछ नहीं है, ये उसको पास कर दिया। और पासिंग के सारे वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे पहले से जमा करके रखे हैं, ठीक है, पहले से सारे जमा करके। तो ट्राई विद दिस एग्जांपल, सारा रेडीमेड कोड है आपको दिया हुआ है, बस आपको समझना है। फॉर एग्जांपल इफ यू एंटर इट्स प्रोबेबली गोइंग टू गिव यू ओनली वन में एक ही यूनिवर्सिटी है विद इंडिया और लाइक इंडोनेशिया। स्पेलिंग क्या है इंडोनेशिया की, यही है क्या? ओके, इंडोनेशिया की स्पेलिंग यही है। देयर आर 189 यूनिवर्सिटीज
Like you can see the response, right? And if you go with example one, so if you go with the Japan, let's see how many records it's going to collect. So there are 566 records that are coming, right? So this is what it's a kind of API which actually gives you, according to a country, how many universities are there and what their code, what's their addresses, what their websites, and whatever, right? So this is how one of the good example how we can hit the API and get the response back to the Salesforce. Like this is also one of the example of becoming a consumer. This is also one of the example of becoming consumer. So now you have almost three examples with you. आपके पास वेदर मैप है, आपके पास पोस्टल कोड है, एंड देन यू आल्सो हैव दिस यूनिवर्सिटी है. ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं. तो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दिस एज वेल, कि इसको भी कंप्लीट कर ले. लेट्स कम बैक टू आर लेट्स कम बैक टू आर our example. So see, this is something called as JSON payload, and JSON payload may all of these fields are coming from the JSON. Okay, I require to capture all those things, and accordingly मुझे फिर एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है. I require to create one new record inside the Salesforce account object. So चलो इसके लिए फिर कोड कर लेते हैं. Let me create an API for that. So, name would be new account manager services. One new Apex class with this name I'm forming. Okay, so let's make this class to be a web service, and for the web service, this must be a global class, and it must implement something called as REST resource. REST, REST resource, and let me mention the URL mapping as well. So URL mapping equals to, yeah. Let's give any name to this website. For example, new town service. Okay, with this name, I'm creating the class. So this is my class. This is my class, global class, new account manager services, and yeah. So let's now create the method called as HTTP post method. Because here what we are trying to do, we are actually trying to insert the record. One JSON payload will come into the request, and we require to process that JSON payload, and at the same time we require to insert the record, right? Okay. So I'm creating the method as well. So global method, always a global and static method. Okay. And let's say कि this is going to return one of the string. एक string जैसे कि record inserted, या record not inserted, ऐसा कुछ message. मतलब message देंगे हम. After processing, that request, after processing that JSON payload, we are supposed to give message या user को message मिलेगा कि your record inserted या फिर record failed, ऐसा कुछ. And that's why the return type I'm giving as a string. Return type I'm giving as a string. Now let me create the method. So insert, for example, new account. Insert new account object method, and this method will going to process all these JSON parameters. Okay, all these JSON parameters. Right. This is method is going to process all these JSON parameters. So what I will be doing is like ACC name. I'm creating the parameters over here. ACC name and then ACC rating, and then for example the next is industry. So ACC in industry. You can give any name over here. That's not so industry. After its annual revenue, so ACC dot annual revenue, and then ACC dot phone. So ACC phone, I'm giving the field name as ACC phone, and then ACC facts and type. ACC facts and example, like ACC type, and then okay, first type ownership website. So ACC ownership, and then ACC website, and then active status and customer. So ACC active and ACC customer. Okay, so these are the parameters. These are the parameters,
that we require to process in the JSON, right? These are the parameters that are coming, and so we require to process that, right? These all are the parameters. Now, why this error is coming? Because it is expecting a return. It is expecting a return type. Yeah. So, okay. So here actually, because we have mentioned one more string, so why this error is coming? Because it's asking you return something. Expected comma. Oh yes, of course. Yes, of course. Why unexpected? Because I haven't mentioned the data type. I haven't mentioned the data type. That's why string. Okay. Rating is also string. Rating is also Rating is also string. So industry again it's industry is also a string because वो pick list है. Industry is also string, right? Annual revenue is your decimal value. Annual revenue is decimal. Annual revenue is decimal, and then phone is again string. Fax is again string. Type is again string value. Ownership is again a string value. Website website is also, let's consider this as to be a string. Website to be a string ही ले लो, although it's URL, but URL internally is your string. URL internally is string as well, right? Active status is again a string, and customer priority, that is again, everything over here is an string. So active status acc dot active, that is also a string, and then customer priority, that is also a string. So because I have not mentioned the data types of each parameter, so actually that was the reason why this was giving. So right now there's one more error, that's about return type. Yeah, return statement. Okay. So हो जाएगा, चलो उसके बाद. Yeah, after that, ठीक है. After that, let me create a variable of, because we wanted to insert this inside the account, so I'm creating an instance of account, right? I'm creating an instance of an account. So this is how you create a local variable. This is how you create the instances of any object. You know this. Now, with respect to ACC, the first thing what I require to enter is name. First thing what I require to enter is name. So it is like, ACC dot name equals to, ACC dot name equals to, should get the value from this, right? Like this. And then ACC dot of example rating, the second value is rating. ACC dot rating equals to your rating. The value whatever come over here, we require to capture that and store it inside this variable. And then so ACC dot, the next is what, industry. ACC dot industry. The value should come from where? From the industry. ACC dot industry. And the next is ACC dot annual revenue. Right, annual revenue. So annual revenue should receive the value from this variable. Annual revenue should receive the value from this variable, right? After that, after annual revenue, it is phone fax. So after annual revenue, it is ACC dot phone, and this should receive the value from ACC phone. And then ACC dot like fax, it should receive the value from ACC fax. And then ACC dot, the next is what? The next is what? After phone fax, the next is type. Type ownership website. ACC dot type. ACC dot type equals to ACC type. It should receive the value from here. And then next would be after type ownership. So it is like ACC dot ownership.
equals to this one, right? After that, after ownership, after ownership, this website, so let's copy this. acc.website should receive the value from this variable. After that, after website, it is like after website is active status. So acc.active should receive the value from this variable, and the final is like your customer diary. So acc.customer variety equals to this one. Now I have created a record, right? Although we haven't inserted, we just created a record. Record is what something that we already have created, right? Chalo. Now once you created the record, time is to insert. Insert what? Insert that ACC. Because against ACC you have created a record. All of these records are present inside one of the container called as ACC. And we require to insert that container so that all these values are going to be get inserted, right? And after inserting, let's first of all check whether the insertion is okay or not. So if acc.id okay, is not equals to null, that means the record is inserted. If id is not null, id is there, then record is inserted. Okay. In that case, we would return a string value, or like we give a message that account inserted, insert account inserted. अगर ऐसा नहीं हुआ, if this won't happen, then else what we are going to say? Then we are going to return one statement. We are going to return that insertion fail, like this insertion, okay, insertion fail. So this is what the program. This is a program to handle. I mean, in your JSON payload, if you are getting only one record, then how to handle that? This program actually demonstrates you the same thing. Now let's execute this program. So for that, I require to open the workbench tool because we are logging into the production. So select the production and click login with the Salesforce. Account is 201. Now let's go to the utilities, and in the utilities go to REST SQL. First of all, select the method. Your method is post, right? Your method is post. Now enter the name of the web service. So web service class is new account service. First of all, you require to make this as Apex REST, and here you would like to give the name. Now, when this service web service is calling, it requires certain payload, right? It requires certain payload. So that JSON payload I already have. This is the JSON payload that we require to copy Santosh Verma, and I'm pasting it over here. I'm pasting it over here, right? This is my JSON payload. This is my JSON payload, right? So let me go to the Salesforce first of all and see whether we have any record the name Santosh Verma. Okay, so we don't see any record with the name Santosh Verma. Let's see what happened when the JSON payload has been processed. Okay, so let's go to this. Let me execute this. So we got one error over here. Unexpected parameter encountered during the deserialization. Account ownership. Column 21 JSON parser error. Ownership. Value of ownership is not matching. That is why we are getting this error. BRIBAT. We have mentioned BRI. Unexpected parameter. ACC ownership. ACC
String and type is also string. Spelling mistake. Okay. ठीक है spelling mistake है, I can understand. Title ऐसे होना नहीं चाहिए, पैरामीटर तो आप कुछ भी दे सकते it should not happen. Let me try it once again. So, difference in the- these two things were not matching. Yeah, see, these two things were actually not matching. That's for the reason ACC ownership. Okay. I mean, in my parameter there was something else. In here I was giving something else. That was the reason why it was not matching. Same thing over here as well. Yeah, fine. So let's now once again try with this with the method post and everything. Let's execute this. Once again, there's an error. Account website. Okay, so websites also required to match. So copy this website and paste it here. See, a small mistake is that. What is that? Small mistake. That small mistake is यहाँ पे S जो है वो small case में है and my response. I mean, JSON payload what I'm giving the S is actually so it should completely match. You know, it should completely match with your JSON payload. So I should rather take it from here. मुझे यहाँ से लेना चाहिए था. It should completely match. So rating, industry, phone, facts, like ownership, website, priority. So I'll do one thing. Let me make some modifications in the program. ACC priority, ACC priority, and copy the same thing over here as well. ACC, ACC priority, and in then it's like ACC active, ACC active. I have mentioned ACC active. It's same. ACC revenue, right? ACC revenue. So ACC revenue should be over here. Here it should also be decimal. Variable name was different. ACC revenue. So whatever you are supplying, whatever you are supplying into JSON, that should perfectly match with your request, and everywhere you should have the same value, right? Okay. So let's now do it once again, and let's execute this. Okay. So now you can see that account inserted, right? You got this message. So the account with the name Santosh Verma is being inserted. Let's go to this account and let's click on the Santosh Verma. I can see the record, the recent record section I can see. Here also you can see Santosh Verma. Santosh Verma with all these details, Santosh Verma with all these details. Now we can see that record is being inserted, right? So this was the example. So this was the example. If we are trying to insert only one record, then how to do that? That is what the code. Let's now move ahead with this. If we are having multiple records, for example,
if this is your JSON payload, by the way, that means you are trying to insert multiple records of the type, what is that, hiring manager. Then how we can process multiple records, right? And very obviously, guys, very obviously, in the real time, this is going to be the use case. This is going to be the use case. It's not always possible कि somebody would only insert one record. Right? Real time पे कैसा होता है कि we are always expecting multiple records to get inserted, right? So if it is one record, how to process that? If it is multiple record, then how to process that? So we should know the both of the process. We should know both of the process. That is why. That is why. Let's understand. So here we will be making use of deserializing method because we will not passing the parameters. Single parameters we are not going to pass it like this. We are not going like this. Rather, what we will be doing is like let me tell you the program. So I'll just create one of the method, basic method. I will not give any parameter inside, right? I'll not give any parameter, right? We will going to make a use of your deserialization method. Okay. So what I will be doing over here is like I'm going to first of all I'll collect that request. I'll collect the body of that request. What is the body? This is the body. This is my JSON payload. This is my JSON payload. So I'll be collecting this body. I'll be collecting this body. So there's a method for that. So for the rest context, first of all you request. What you request? You request body, and you will convert that body into the string. That everything over here is going to be get converted into the string. That whole string data will going to be get stored inside one of the string variable. Okay, and then you will deserialize that string variable. You will deserialize that particular string variable. After deserialization, yeah, after deserialization, this data should be converted into which form? तो यहाँ पर हम explicit typecasting कर रहे हैं because there are multiple records of hiring manager. We are converting this into the list of hiring manager, and then it is going to be stored again in the form of list of hiring manager with some name. Okay, with some name, right? And what you are deserializing? You are deserializing this data, so it is like list of hiring manager dot class. So this is how we are going to process it. चलो बना लेते हैं इसको भी. So the name is bulk hiring manager. Create a new class. I'm creating for that. Process that multiple records. Process that multiple record. I'm creating a class, a global class, a global class. Yes, I'm creating a global class for that. Second, let me mute my phone. Yeah, and make this as a REST resource with URL mapping equals to. I give any name for that, like bulk HR records services. Bulk HR record services. Okay, or service. This is what the name I am giving. After that, yeah, at the rate plus resource. Okay. Yeah. Now, the method what we are creating is again post. So HTTP post method global static, and it's again going to return one of the string value global static string, and insert bulk HR records. Insert bulk HR records. Okay. Save it. Yeah. So what I will be doing is like first of all request. First of all, form a request to collect the body of your request. So string HR records collection. Okay, equals to here we will be going to make the use of your REST context class. So REST context dot request. What do you wanted to request? I wanted to request the body.
I wanted to request the body. ठीक है, पता नहीं यार यहाँ पे बताते हैं. Although this is a method of that particular class, what is the reason why it's not showing body? And then let's convert that to string. इसको हम string में convert कर लें. ठीक है. So this is what the this is the complete set of requests. This is the complete set of requests. ये आप VS में करोगे ना, VS कोड में वहाँ बताता है. यूजुअली यहाँ से तो कोड नहीं करता हूँ मैं, नहीं तो VS में ही करता हूँ. बट VS में ना ये बताता है रिक्वेस्ट के आगे रिक्वेस्ट बॉडी स्ट्रिंग वगैरह. पता नहीं यहाँ क्यों नहीं बताता है. एनीवेज छोड़ो, नहीं बता रहा तो नहीं बता रहा. हमको जो आपको तो पता है मतलब क्या लिखना है. ठीक है. हाँ अभी देखो यार कैसा होगा कि वो सारा जितने भी ये पूरा जेसन पेलोड, दिस कंप्लीट पेलोड, ये पूरा जेसन पेलोड विल गेट कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग. और वो स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर हो चुका है, यहाँ पे. अब यहाँ से अपने को डीसीरियलाइज करना है उसको. ठीक है, हमको उसको क्या करना है, डीसीरियलाइज करना है. तो डीसीरियलाइज करने के बाद में इट शुड गेट स्टोर्ड. पहले डीसीरियलाइजेशन करते हैं, बाद में रिटर्न टाइप पे आते हैं. तो अगर आप इसको डीसीरियलाइज कर रहे हैं तो उसके जो मेथड है आपकी, दैट इज सिस्टम डॉट जेसन डॉट डीसीरियलाइज. ठीक है, सिस्टम डॉट जेसन डॉट डीसीरियलाइज, ये मेथड है. Okay. Now this method, first of all, what is the parameter it require? It requires the JSON string. तो JSON string कहाँ पे कलेक्ट कर रखी है आपने, यहाँ पे कलेक्ट कर रखी है, तो आप यहाँ पे उसको दे दिया. और दूसरा कि ये कौन सा अपेक्स टाइप में कन्वर्ट होने वाला है. अपेक्स टाइप मतलब क्लास. ठीक है, तो इसमें हम डॉट क्लास लिखते हैं, हमेशा आपको याद होगा. अपेक्स टाइप मतलब क्या, डॉट क्लास. बट कौन सी क्लास. अगर ये एक वेरिएबल होता, इफ दिस वाज जस्ट वन रिकॉर्ड, नॉट वेरिएबल, इफ दिस वाज जस्ट वन रिकॉर्ड तो मैं हायरिंग मैनेजर क्लास दे देता हूँ, हायरिंग मैनेजर क्लास दे देता. बट दीज आर मल्टीपल, एक्चुअली इसकी क्लास जो है दिस इज हायरिंग. हायरिंग कॉपी करके लेके आता हूँ. तो इसकी जो क्लास है, क्लास ORM मतलब ऑब्जेक्ट क्लास होता है, ऑब्जेक्ट क्लास होता है. तो इसकी जो क्लास है, दैट एक्चुअली द क्लास इज व्हाट, द क्लास इज हायरिंग मैनेजर. अकॉर्डिंग टू ORM एवरी ऑब्जेक्ट इज अ क्लास, राइट. एवरी ऑब्जेक्ट इज अ क्लास. बट कैसा, एक रिकॉर्ड नहीं है ना, एक रिकॉर्ड नहीं, देयर आर मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द जेसन पेलोड. यू कैन सी देयर आर मल्टीपल रिकॉर्ड्स. what you require to do is like you should make this as a list collection. So it's a class, but it's a collection class. It's a class of multiple hiring manager records. It's a class of multiple hiring manager records, right? Now this is what going to be get deserialized. अब जब ये deserialize होता है तो we require to perform the टाइप कास्टिंग एज वेल. हमको यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ती है. तो मतलब किस में कन्वर्ट करना है, वी शुड कन्वर्ट दिस इनटू सेम थिंग. वी शुड कन्वर्ट दिस इनटू लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर. And it's going to return what? It's going to return you the same thing. List of hiring managers going to return. And let's collect this inside any of the variable. For example, LST HR records like this. So now this is your complete, now this is your complete set of the request. Let me try to save this. So list of hiring managers. I'm actually deserializing this particular the request to body जो मैंने convert कर लिया उसको. I'm deserializing that. I'm deserializing that into which class? List of hiring manager class. It's going to return me list of hiring manager records that needs to be converted. That needs to be get collected inside again list of hiring manager. Right? That is what. ये हमने उस वक्त काफी सारा किया है, तो I hope ये आप लोग को याद हो सभी को. Now, as a best practice, I'm going to check whether this particular collection is not empty. We always require to do this. So not of this collection dot is empty. Okay. If this collection is not empty, if this collection is not empty, then what do you require to do? Insert. पूरा पूरा record insert करो, पूरा पूरा collection insert करो. Insert this. ठीक है. और insert करने के बाद एक statement return. ठीक है. Return जैसे कि या success. SUCCESS success. Okay. और else अगर ऐसा नहीं है, by the way, or else अगर ऐसा नहीं है, if it's not the case, ठीक है, if it is not the case, then what you can simply return, ये इतना नहीं जाते हैं. else like अगर ऐसा नहीं है, just return fail. FAILE fail. ठीक है, that's it. ठीक है, चलो. So this is like, तो मेरे ख्याल से यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि एक रिकॉर्ड प्रोसेस करने से
एक रिकॉर्ड प्रोसेस करने का कोड तो भी थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स कोड करने का, मल्टीपल रिकॉर्ड्स प्रोसेस करने का कोड बहुत बिल्कुल ईजी रहता है। यू जस्ट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना आपकी, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ऑलवेज स्टार्ट विद जेसन सिस्टम डॉट जेसन डॉट डीसीरियलाइज, यहाँ से इसकी शुरुआत करो पहले, हमेशा यही से शुरुआत करो। इसको लिखना जब शुरू करो तो यहाँ से शुरू करें किया करो, सिस्टम डॉट जेसन डॉट डीसीरियलाइज। तो वो मेथड अपने आप फॉर्म हो जाती है, वो बताती है आपको कि दो चीजें चाहिए। पहला क्या चाहिए मेरे को कि भैया कौन सी जेसन स्ट्रिंग है, तो जेसन स्ट्रिंग तुमने जहां से कलेक्ट कर रखी है, जैसे यहाँ पे कलेक्ट कर रखी है, तो उसका नाम दे दो। और देन उसको कौन सी अपेक्स मेथड में कन्वर्ट कर, तो अपेक्स मेथड इज ऑलवेज अ क्लास। फिर अब ये देखो कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स कितने हैं, एक रिकॉर्ड या मल्टीपल, इवन आप एक रिकॉर्ड को भी प्रोसेस कर सकते थे, इसको भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, बट दो अलग अलग वे से मुझे बताना था, दैट्स वाई मैंने ये तरीका अपनाया और ये तरीका। तो आप चाहें तो जेसन और डीसरियलाइज यहाँ पर भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे जो मेथड बनेगी उसमें एक ही रिकॉर्ड आएगा वहां पे। यहाँ पर फिर क्या लिख के आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे अकाउंट डॉट क्लास बस, उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, अकाउंट। डेटा कहाँ क्रिएट होगा, अकाउंट, अकाउंट एसीसी फॉर एग्जाम्पल। ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, ऑफकोर्स पॉसिबल है, बट यू शुड नो द टू मेथड्स। ऐसा अगर आप अकाउंट एसीसी डॉट वो पूरी मेथड कर रहे हो, तो बाद में ये जो पूरा किया एसीसी डॉट नेम वगैरह वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिस्ट कलेक्शन में स्टोर करके सीधा लिस्ट कलेक्शन को इंसर्ट कर देना, सेम थिंग। तो यहाँ पे किया है मैंने, एक लिस्ट कलेक्शन में इंसर्ट करके लिस्ट कलेक्शन को कर देना, हालांकि लिस्ट कलेक्शन में एक ही रिकॉर्ड रहेगा। या फिर एक वेरिएबल लेके भी आप कर सकते हो, वेरिएबल को इंसर्ट कर देना। तो दोनों तरीके हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यही मतलब सिंगल रिकॉर्ड के लिए ये फॉलो करना, मल्टीपल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। यू शुड नो द बोथ ऑफ द वेज, इसीलिए हम इस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। सो हो गया, कोड तो हो गया, अब इसको कॉल कर लेते हैं। कोड तो हो गया है, तो कॉल कर लेते हैं। सो एक्सपोर्ट योर वर्कबेंच टूल, और वर्कबेंच टूल पे आप गिविंग द नेम एज लाइक ये। यहाँ पे फील्ड नेम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फील्ड, तो फील्ड नेम अगर इससे मैच नहीं होगी तो इट्स गोइंग टू थ्रो यू द एरर, इट्स गोइंग टू थ्रो यू द एरर्स। तो पहला तो नेम तो सब में कॉमन होता है, लोकेशन, लोकेशन अंडरस्कोर सी, लोकेशन अंडरस्कोर सी, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर सी। ठीक है, ये भी मैच हो रहा है। और ईमेल आईडी अलग है आपके केस में, HR ईमेल आईडी जो फील्ड है, चार, चार। यहाँ पर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये जेसन पेलोड में और आपके सेल्सफोर्स फील्ड के नेम एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, जबकि इसके पहले वाली रिक्वेस्ट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर ये अलग है तो फिर आप, अगर हमें यहाँ पे उसका कुछ और नाम है और आपके ऑब्जेक्ट में कुछ और नाम है, तो आप फिर इसको इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कब, जब आपके जेसन पेलोड में जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं उसका नाम कुछ और है, और अगर आप वो स्ट्रिंग्स आ रही है जिसका नाम, जिसमें फील्ड्स का नाम आपके इसके साथ मैच हो रहा है, तब आप ये ले सकते हो। मैं एक बताऊँ, रियल टाइम पे व्हाट वी यूजुअली डू इज लाइक, हम यूजुअली इंटीग्रेशन कैसा परफॉर्म करते हैं कि इंटीग्रेशन हमेशा याद रखो कि दो लोगों का जॉब होता है, इसमें एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो फॉर एग्जाम्पल दे वांटेड टू सेंड द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस, तो हम क्या करते हैं, हमारी साइड से ना सेल्सफोर्स के जो फील्ड्स होती हैं ऑब्जेक्ट की, वो उनको दे देते हैं कि अगर आपको लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू एंटर द वैल्यू ऑफ लोकेशन, तो लोकेशन के लिए आप ये की इस्तेमाल करेंगे, लोकेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो ये जो पेलोड है ना, ये पेलोड जब वो लोग बनाते हैं तो दे विल गोइंग टू यूज द नेम्स ऑफ योर फील्ड। हमेशा याद रखो, इंटीग्रेशन एक मैन, मतलब इट्स अ टू मैन जॉब। इंटीग्रेशन जो होता है वो एक आदमी का काम नहीं होता है यूजुअली। ठीक है, हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, बट अगर नहीं भी है, मान के चलो ऐसा कोई है नहीं जहाँ पे एक्सचेंज कर सकते, एंड इवन इफ दिस इज योर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, दैट कुड आल्सो बी प्रोसेस। ठीक है, दैट कुड आल्सो बी प्रोसेस। चलो, चार ईमेल आईडी आई, ठीक है, अभी तो ये सेम दिख रहा है। सो नाउ कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन, और हियर आई एम पेस्टिंग दिस। Method is post. Execute is post. Success. That when your record is inserted, right? Which name? Service to service one ऐसे नाम से insert हुआ है. So let's go to the hiring manager. Service ये देखो, service one, service two, service three, service four. You can see your record has been inserted, right?
So these are the two ways to insert the record, जिसमें एक रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड, दूसरा when the fields that are coming into the JSON payload, if they are having the same name as your fields of Salesforce, and if they are having different name as the fields of the Salesforce, and how to process that two things what you have learned with these two examples. ठीक है, चल आज इतना ही करो. And you have certain assignments as well. See, you have like 5 plus 2, that's 7. You are having 7 assignments with you. The next lecture I will going to start with put method. ठीक है. And see, शाम में बैच लूँ या नहीं लूँ, that's a different story. अगर मैं available हूँ मैं बता दूंगा. Otherwise your time is fixed, like 9 o'clock will be your timing. I mean, अभी रोज अनाउंस करने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए. 9 AM is your time. ठीक है. और अगर मैं शाम में एडिशनली क्लास लेता हूँ, that I will going to announce that. I'll going to announce that. Fine. Okay. Recursive triggers पे आते हैं. तो recursive triggers मैंने कहा, let me try to see that. ये मैंने मेरे लॉगिन पे कहीं तो भी, मैंने सैंडबॉक्स पे कहीं तो भी क्रिएट किया है. ठीक है. सो शायद वो कोड तो नहीं निकाल पाऊंगा मैं. एनीवेज, यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. व्हाट हैपेंस इज लाइक कि मैं एक ट्रिगर क्रिएट कर रहा था कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे, और कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे व्हेन आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट दिस ट्रिगर, तो इट वाज काइंड ऑफ it was actually why this was happening, let me tell you that. So after insert, after update, after undelete, and after delete, these were my operations. Now see what happens is like contact object पे, ठीक है, दो चीजें अप्लाइड थी. एक है ट्रिगर जो आपके साथ, जो अभी आपके सामने है, और दूसरा मैंने एक प्रोसेस बिल्डर क्रिएट कर रखा था. दैट प्रोसेस बिल्डर वाज परफॉर्मिंग फील्ड अपडेट ऑपरेशन. ठीक है. दैट प्रोसेस बिल्डर इट वाज परफॉर्मिंग that process builder was performing field update operation, the field update operation. Now what was happening is like, if a record get inserted or if it is an updated, okay, after delete and delete के लिए नहीं, but when a new record got inserted or it maybe it is updated, तो जैसे ही एक नया रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया या फिर आपने अपडेट किया, तो ये ट्रिगर कॉल हो रहा था. ठीक है, ये ट्रिगर कॉल हो रहा था which was doing some operation, which was doing some operation. Now आफ्टर इंसर्ट और मे बी आफ्टर अपडेट ये ट्रिगर कॉल हो रहा था, एंड दैट वाज मेकिंग सर्टन चेंजेस इन वन ऑफ द फील्ड. एक फील्ड पे आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट ये कुछ मतलब दिस ट्रिगर वाज गेटिंग कॉल्ड एंड इट वाज मेकिंग सर्टन अपडेट ऑन टू दिस फील्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, दिस इज माई कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज माई कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, दिस वन इज माई कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट. So when you are trying to insert or you are trying to update, तो ये ट्रिगर कॉल हो रहा था, इट वाज मेकिंग सर्टेन चेंजेस ऑन टू दिस फील्ड. ठीक है, ये पहला ऑपरेशन, दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेशन, दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेशन. नाउ इमीडिएटली आफ्टर द ट्रिगर हैज बीन कॉल्ड, इमीडिएटली आफ्टर द ट्रिगर हैज बीन कॉल्ड, जैसे ही फील्ड अपडेट एक्शन हो रहा था, तो ड्यू टू दैट फील्ड अपडेट ऑपरेशन, ड्यू टू दैट, क्योंकि मैंने जो प्रोसेस बिल्डर में जो क्राइटेरिया था मेरा, दैट वाज क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज अपडेटेड, क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज अपडेटेड, पर मैंने एक प्रोसेस बिल्डर भी क्रिएट कर रखा था. तो जैसे यहाँ पे फील्ड पे अपडेशन हो रहा है, तो इमीडिएटली मेरा प्रोसेस बिल्डर कॉल हो रहा है, एंड प्रोसेस बिल्डर इज अगेन परफॉर्मिंग सम फील्ड अपडेट ऑपरेशन. अब प्रोसेस बिल्डर फील्ड अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, फील्ड अपडेट ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय प्रोसेस. जैसे यहाँ पे कुछ अपडेट हो रहा है, तो पहला भले ही मेरा ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट पे कॉल हुआ था, दूसरा ट्रिगर काय पे कॉल हो गया मेरा, आफ्टर अपडेट, बिकॉज ये प्रोसेस बिल्डर ने यहाँ पर एक फील्ड, चाहे कोई भी एक फील्ड थी, वो फील्ड को अपडेट कर दिया. अब जैसे यहाँ पे फील्ड अपडेट हो जाती है, मेरा आफ्टर अपडेट वाला ट्रिगर फायर होता है. आफ्टर ट्रिगर वाला अपडेट फायर होता है, इट इज गोइंग टू अपडेट सर्टन थिंग्स. फिर जैसे ये अपडेट होता है, फिर से ये कॉल हो जाता है, ये फिर से अपडेट करता है, ये अपडेट होते ही ट्रिगर कॉल होता है, ट्रिगर अपडेट करता है, ट्रिगर अपडेट होते ही प्रोसेस बिल्डर कॉल होता है, प्रोसेस बिल्डर फिर से अपडेट करता है, प्रोसेस बिल्डर अपडेट करके ट्रिगर, एंड दिस बिकम्स अ रिकर्सिव ट्रिगर, दिस बिकम्स अ रिकर्सिव. तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, तो उसके लिए व्हाट यू रिक्वायर टू डू इज लाइक इन स्टैटिक बूलियन वेरिएबल्स लेना पड़ता है. ठीक है, हमेशा. हाउ टू हैंडल दैट, तो उसके लिए फिर मैंने एक क्लास बनाई जिससे मैंने कुछ नहीं किया, बस एक ही वेरिएबल रखा है, पब्लिक क्लास हैंडल रिकर्सिव ट्रिगर नाम से मैंने क्लास बनाई, जिससे मैंने एक स्टैटिक बूलियन वेरिएबल लिया.
एक स्टैटिक बुलियन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ट्रू। इनिशियली उसकी वैल्यू क्या रखी है मैंने, ट्रू। ठीक है, स्टैटिक बुलियन वेरिएबल जिसका नाम है फर्स्ट रन, इसका नाम है, एक वेरिएबल बनाया, बुलियन वेरिएबल है जिसका नाम है फर्स्ट रन, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रखी ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई। ठीक है, कि अगर वो जो में जो क्लास है हैंडल कॉन्टैक्ट रिकर्सिव ट्रिगर में जो फर्स्ट रन नाम का वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो ही ट्रिगर का कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ही उसका ट्रिगर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कैसा है कि फर्स्ट टाइम इट वाज लाइक ट्रू, फर्स्ट टाइम इट वाज ट्रू, फर्स्ट टाइम इट वाज ट्रू, है ना। अब ये ट्रू था तो आपके ट्रिगर का वैल्यू क्या हुआ, ट्रिगर का वैल्यू, ट्रिगर एग्जीक्यूट हो गया। एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ट्रिगर, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ट्रिगर, अब ये जो क्लास जहां खत्म हुई, ये जो क्लास जहां खत्म हुई, जैसे ही वो ट्रिगर के स्कोप से बाहर आता है, जैसे ही वो ट्रिगर के स्कोप से, आफ्टर परफॉर्मिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रिगर, एज सून एज इट कम्स आउट ऑफ द ब्लॉक, मैंने वो फर्स्ट रन की वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स कर दी। अब इससे क्या हुआ देखो, ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ, ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ, ट्रिगर ने फील्ड अपडेट एक्शन परफॉर्म कर दिया पहली बार, क्योंकि वो वैल्यू क्या थी, ट्रू। उसके बाद में मेरा प्रोसेस बिल्डर एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेस बिल्डर ने फिर से, प्रोसेस बिल्डर ने फिर से फील्ड अपडेट कर दी। अब जैसे फील्ड अपडेट हुई फिर से ट्रिगर फायर, फिर से ट्रिगर फायर हुआ, फिर से ट्रिगर फायर हुआ, लेकिन आपने इसकी वैल्यू क्या कर रखी है, फॉल्स। ठीक है, ट्रिगर जब एग्जीक्यूट होता है तो वो जाएगा, इसको चेक करेगा कि हैंडल रिकर्सिव ट्रिगर की वैल्यू ट्रू है क्या, लेकिन आपने फर्स्ट रन के बाद आपने उसकी वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स, तो इसको मिली उसकी वैल्यू फॉल्स। तो फॉल्स मिलने की वजह से आपका ट्रिगर सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहली बार ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ, फील्ड अपडेट हुआ, फील्ड अपडेट होते ही प्रोसेस बिल्डर कॉल हुआ, प्रोसेस बिल्डर ने फील्ड अपडेट किया, फील्ड अपडेट करके फिर से ट्रिगर कॉल हुआ, फिर से ट्रिगर कॉल हुआ, लेकिन अब ट्रिगर एग्जीक्यूट नहीं होगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, बिकॉज हैंडल ट्रिगर की वैल्यू क्या है, बस इतना सा कोड है, सिर्फ इतना सा कोड है ये। तो इस तरह से मैंने रिकर्सिव ट्रिगर का जो प्रॉब्लम है उसको हैंडल किया। ठीक है, ये कहाँ किया था यार, अभी याद नहीं आता है, दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, तो कौन सा कोड कहाँ लिख रहा हूँ ख्याल नहीं रहता है। ट्राई करता हूँ दिखाने का। टाइप पर लिखा हुआ ट्रिगर है यार, अरे कॉन्टैक्ट, ट्रिगर का पे लिखा है कॉन्टैक्ट, चलो कोशिश करता हूँ दिखाने। तो उसी डब्ल्यू के लिए ही लिखा होगा मैं। हाँ यही है, देखो यही कोड। तो दिस इज माय ट्रिगर ऑपरेशन, ये पूरा जो ब्लॉक है ना ये मेरा ट्रिगर का ऑपरेशन है। व्हाट यू सी ओवर हियर इज माय ट्रिगर्स एग्जीक्यूशन। तो बिफोर परफॉर्मिंग दैट एग्जीक्यूशन व्हाट आई एम गोइंग टू चेक कि हैंडल कॉन्टैक्ट जो क्लास है उसका जो वैल्यू है वो ट्रू है या नहीं। ठीक है, सो एक क्लास बनाई, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रखा है फर्स्ट रन करके, बुलियन वैल्यू, उसकी इनिशियल वैल्यू है ट्रू। जब ये पहली बार कॉल होगा, जब ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो ये चेक करेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है, तो ऑफकोर्स है, तो पहली बार आपका ये ट्रिगर कॉल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपका ये ट्रिगर कॉल हो जाएगा, एंड वॉट एवर द ऑपरेशन इट इज एक्सपेक्टेड टू डू, दैट इज गोइंग टू गेट परफॉर्म। ठीक है, दैट इज गोइंग टू गेट परफॉर्म। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो वैल्यू अपन कहाँ लिखते हैं, जहां भी आप कोई डीएमएल लगा रहे हो वो डीएमएल से पहले ये वैल्यू लिखना कभी भी। मतलब जो आपको वो जो वेरिएबल है स्टैटिक बुलियन वेरिएबल उसको फॉल्स करना है, तो वो कहाँ किया जाता है, हमेशा डीएमएल से पहले। मैंने दो जगह डीएमएल यूज करें तो दोनों जगह डीएमएल यूज करने से पहले मैंने वो वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको फॉल्स कर दी, उसके बाद फिर मैंने मेरा डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर डीएमएल परफॉर्म करके जैसे ही मैं अपडेट मार रहा हूँ वैसे ही मेरा प्रोसेस बिल्डर कॉल हो, जैसे ही अपडेट मार रहा हूँ वैसे ही प्रोसेस बिल्डर कॉल हो। तो प्रोसेस बिल्डर कॉल होने, प्रोसेस बिल्डर क्या कर रहा है, वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो भी अपडेट कर रहा है, उसके अपडेट करते फिर से ये ट्रिगर कॉल करेगा। तो ये अपडेट होने से पहले ही आपका डीएमएल फायर होने से पहले ही आपको ना वो स्टैटिक बुलियन वेरिएबल की वैल्यू ने फॉल्स कर देने का। उसके बाद आप अपडेट करो, अपडेट करते ही आप मेरा प्रोसेस बिल्डर भी फायर होगा, मतलब यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस बिल्डर भी बना रखा था। ठीक है,
कौन सा प्रोसेस बिल्डर है वो भी दिखा देता हूँ, मतलब किसकी वजह से रिकर्सिव ऑपरेशन आ रहा है। कॉन्टैक्ट के ऊपर में एक प्रोसेस बिल्डर बना रखा है मैंने, ये वाला कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये डेटा सिंक्रोनाइजेशन का है, मेरा डेटा सिंक किया हुआ है, मतलब कुछ फील्ड्स हैं इधर से उधर ट्रांसफर करवानी, डेटा सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है कि कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में अप्रूव रेंट मैच स्टेटस रेंट रीजन की कुछ फील्ड्स हैं, उसको वो अपडेट कर रहा है। और इसका क्राइटेरिया क्या है? व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड इट इज एडिटेड, देखो ये क्राइटेरिया दिख रहा है हल्का सा व्हाइट कलर, उससे मतलब ये है कि ये समझ में आ रहा है कि ये वाला। तो रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज एडिटेड, तो वही चीज तो हो रही है। आप जैसे ही आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो या एडिट कर रहे हो, इधर में भी आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट लगा रखा है। अब जैसे इंसर्ट किया मैंने, ये अपडेट किया, तो ये ट्रिगर कॉल हुआ। ट्रिगर ने ट्रिगर ने फिर क्या किया, ट्रिगर ने कुछ अपडेशन परफॉर्म करे, राइट, अपडेशन परफॉर्म करे ट्रिगर्स ने, ये अपडेट किया, या फिर ये नहीं तो ये अपडेट किया, जो भी है ट्रिगर ने अपडेट किया। ट्रिगर के अपडेट करते ही ट्रिगर के अपडेट करते ही, क्योंकि अच्छा, अभी एक क्वेश्चन अगर ये कोई पूछे आपसे कि ट्रिगर पहले कॉल हो रहा है या प्रोसेस बिल्डर, तो ये आफ्टर ट्रिगर है, ये बाद में कॉल हो रहे हैं। ये आफ्टर ट्रिगर बाद में कॉल होते हैं, बिफोर ट्रिगर हमेशा पहले कॉल होता है, ठीक है। फिर प्रोसेस बिल्डर रन हुआ, एक मिनट, नहीं नहीं, प्रोसेस बिल्डर और इसके कंपैरिजन में ट्रिगर ही हमेशा पहले फायर होता है। प्रोसेस बिल्डर और ट्रिगर और वर्क फ्लो के कंपैरिजन में आपको देखना पड़ता है कि ट्रिगर कौन सा है। अगर ट्रिगर बिफोर है तो वो पहले होगा, वर्क फ्लो बाद में होगा, ठीक है। अगर ट्रिगर है बिफोर ट्रिगर, तो ये पहले होगा, उसके बाद में आपका वर्क फ्लो फायर होगा, ठीक है। और अगर ट्रिगर है आफ्टर, जैसे मेरी केस में आफ्टर है, तो पहले वर्क फ्लो फायर होता है और बाद में फिर आपका आफ्टर ट्रिगर फायर होता है। ये हो गया ट्रिगर विद वर्क फ्लो कंपैरिजन। लेकिन अपना कंपैरिजन ट्रिगर विद प्रोसेस बिल्डर है, प्रोसेस बिल्डर हमेशा बाद में होगा, चाहे आपका ट्रिगर हो बिफोर ट्रिगर, चाहे आपका ट्रिगर हो आफ्टर ट्रिगर, दो ही ट्रिगर्स होते हैं, बिफोर और आफ्टर, बस, ठीक है। बिफोर और आफ्टर दो ही तरह के ट्रिगर्स होते हैं। ये पहले ही फायर होगा और बाद में प्रोसेस बिल्डर। इसके लिए आपको जो सेल्सफोर्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो याद होना चाहिए। सेल्सफोर्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आई थिंक मैंने दिया है आप लोगों को, नहीं दिया तो आप गूगल करो, निकालो डायग्राम, सेल्सफोर्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, सेल्सफोर्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, सेल्सफोर्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये आप निकालो तो आपको ये डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाता है। मैं दिया था शायद तुम लोगों को, मुझे याद नहीं है, बट शायद कभी ना कभी बात निकली होगी तो मैं दिया होगा तुम। अरे हाँ, ये बात, वन वन द इमेजिंग, हाँ, ये जूम होता है कि जूम नहीं होता है। देखो वैसे देखा जाए तो हमेशा बिफोर ट्रिगर है, देखा जाए तो हमेशा बिफोर ट्रिगर है, बिफोर ट्रिगर के बाद में कोई भी वैलिडेशन रूल आता है, ठीक है। और फिर है आपका आफ्टर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर के बाद भी वर्कफ्लो, अच्छा नहीं मैं आपको गलत बता रहा था बॉस। ट्रिगर चाहे कोई भी ट्रिगर हो, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, अब वैलिडेशन रूल के साथ में पहले बिफोर है फिर ये, हाँ, सॉरी मैं गलत बता रहा था। बिफोर या आफ्टर ट्रिगर हमेशा पहले फायर होगा, उसके बाद आपका वर्क फ्लो, और उसके बाद में प्रोसेस एंड फ्लोस, प्रोसेस बिल्डर या फ्लोस, ये हमेशा बाद में। तो पहले हमेशा कौन आता है आपका ट्रिगर, बिफोर ट्रिगर या आफ्टर ट्रिगर ठीक है, बिफोर ट्रिगर या आफ्टर ट्रिगर, ओके। उसके बाद में आपका आता है फ्लोस, वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले मेरा ये ट्रिगर फायर होता है, ट्रिगर फायर होने के बाद में जो भी अपडेशन उसने करना है वो अपडेशन कर देता है, जो भी अपडेशन करना है अपडेशन कर देता है। वो जैसे ही अपडेट करता है, वो जैसे ही अपडेट करता है, आफ्टर आफ्टर रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड, मेरा ये प्रोसेस बिल्डर फायर होता है। प्रोसेस बिल्डर क्या कर रहा है, प्रोसेस बिल्डर फिर से फील्ड अपडेट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। फील्ड अपडेट एक्शन इसने परफॉर्म किया, इसने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, इसके अपडेट करते ही फिर से मेरा ट्रिगर फायर हो जाता है। तो ये रिकर्सिव ट्रिगर का प्रॉब्लम था। मैंने इसको किस तरह से हैंडल किया कि अपडेट करने से पहले ये क्लास बनाई जिसमें एक ही वेरिएबल बनाया, स्टैटिक बूलियन वेरिएबल बनाया, जिसका टाइप है स्टैटिक बूलियन, जिसका नाम है फर्स्ट रन, उसकी वैल्यू रखी ट्रू। और ट्रिगर एग्जीक्यूट करने से पहले, इसके पहले कि मैं ट्रिगर पे जाऊं, इसके पहले कि मैं ट्रिगर पे जाऊं, इसके पहले कि मैं ट्रिगर पे जाऊं, ट्रिगर पे जाने से पहले मैंने चेक किया कि वेदर दिस इक्वल्स टू ट्रू। अगर ट्रू है तो पहली बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आपको अपडेट करने की बारी आई, तो अपडेट करने की बारी डीएमएल परफॉर्म करने से पहले वो फर्स्ट रन नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स। उसके बाद आप ये करो अपडेट, ये अपडेट करोगे उधर आपको प्रोसेस बिल्डर भी फायर होगा, ऐसा नहीं, उसको नहीं रोक सकते आप। प्रोसेस बिल्डर फायर होने के बाद फिर से ट्रिगर फायर नहीं होगा,
क्योंकि अब इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, फॉल्स। ऐसा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर रिकर्सिव ट्रिगर का प्रॉब्लम जो आता है, उसको इस तरह से हैंडल किया जाता है। देखो कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल है ये, बस लॉजिक है, बस लॉजिक है और कुछ नहीं। तो दिस आई वाज ट्राइंग टू शो यू कि देखो भाई ऐसे इसको हैंडल कर ले। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए रिकर्सिव ट्रिगर का, और वो क्यों आएगा मैं बताऊं आपको, ये इसी वजह से आएगा, रियल टाइम पे इसी वजह से आएगा। या एक तरफ तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट में तुमने ट्रिगर भी बना रखा है, उसी पे तुमने प्रोसेस बिल्डर बना रखा है, या फिर फ्लो बना रखा है, या फिर तुमने वर्क फ्लो बना रखा है। वर्क फ्लो जनरली कोई नहीं बनाता आजकल, प्रोसेस या फ्लोज चल रहा है। तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम आएगा वो, ये जो तुम प्रॉब्लम आएगा तुमको रिकर्सिव ट्रिगर वाला, वो इस वजह से आएगा। क्योंकि एक चीज बताओ, इंसान क्या होता है प्रोग्रामिंग की जब करते हैं ना हम लोग, तो प्रोग्रामिंग में जैसे अगर एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉन्टैक्ट पे ट्रिगर बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कॉन्टैक्ट पे ट्रिगर बना रहा हूँ, तो मैं एक ही ट्रिगर बनाऊंगा, और मैं सारा जो कोड है मेरा, सारा जो कोड है ना मेरा, वो एक ही ट्रिगर में इनबिल्ट करूँ, अलग अलग लॉजिक लगा लगा, ठीक है, अलग अलग लॉजिक लगा के। अभी मैं शायद वो भी दिखा पाऊंगा, ट्रिगर बनाया था, शायद ये भी दिखा पाऊँ। हाँ, से अलग अलग सिनेरियोज के लिए, अगर इंसर्ट है, अगर अपडेट है, अगर इस डिलीट है, तो ये वाला सिनेरियो मेरा काम कर, ठीक है। अगर इन अपडेट और डिलीट है तो मेरा ये वाला सिनेरियो काम, ठीक है। उसके बाद में एक अलग सिनेरियो है मेरे पास में, यूनिट्स इक्वल्स टू अकाउंट, तो उसके लिए मेरा कोड यहाँ पर है, ठीक है। एक दूसरा सिनेरियो है जो अकाउंट इक्वल्स टू कंपनी के लिए काम करता है, तो ये मेरा सिनेरियो। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो, यहाँ पे अगर आप गौर करो तो कैसा होता है कि ट्रिगर जनरली हम एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर बनाते हैं। देखो अलग इतने सारे लॉजिक्स मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, विद दिस ट्रिगर आई एम प्रोसेसिंग दिस मच ऑफ द लॉजिक। इतने सारे लॉजिक जो है ना मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, मतलब लॉजिक टू सबमिट यूनिट फॉर अकाउंट, लॉजिक टू अपडेट हाउस अकाउंट यूनिट वट एवर, लॉजिक टू अपडेट मोस्ट रिसेंट सबमिटेड, ये सारी फील्ड्स के नाम है। लॉजिक टू अपडेट मोस्ट रिसेंट लीज, अपडेट टोटल यूनिट सबमिटेड, ठीक है। ये सारे क्या है, दीज ऑल आर माई लॉजिक्स, ये सारे मेरे कस्टम बिजनेस लॉजिक है। ये सब के लिए ट्रिगर रिक्वायर्ड था, तो मैंने अलग अलग ट्रिगर नहीं बनाए, मैंने भाई एक ट्रिगर बनाया प्रोडक्ट यानी यूनिट पे, यूनिट हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका नाम प्रोडक्ट है इंटरनली, तो उससे मैंने एक ट्रिगर बनाया, उसके अंदर मैंने सारे बिजनेस लॉजिक लिखा है। यहां से कभी भी आपको मैं बताऊं रिकर्सिव ट्रिगर का प्रॉब्लम आता ही नहीं। प्रॉब्लम कब आता है रिकर्सिव ट्रिगर का, जब आपने ट्रिगर को प्रोसेस बिल्डर या फ्लोस के साथ मिक्स कर रखा है, तब आता है रियल टाइम पे कि एक तरफ तुम्हारा प्रोसेस बिल्डर भी फायर हो रहा, तो ट्रिगर कॉल हो रहा है, या फिर ट्रिगर कॉल होके प्रोसेस बिल्डर फायर हो रहा है, फिर से ट्रिगर कॉल हो रहा है, या प्रोसेस बिल्डर या फ्लोस फायर हो रहा है, फिर ट्रिगर कॉल हो रहा है, फिर से फ्लोस फायर हो रहा है, फिर ट्रिगर कॉल हो रहा, तो तब आता है रिकर्सिव ट्रिगर का। जनरली रिकर्सिव ट्रिगर का प्रॉब्लम है ट्रिगर के अंदर से कभी जनरेट नहीं होता, क्योंकि अपन ना सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल बनाते हैं हर किसी का, तो जनरली यहाँ से कभी नहीं होता है, यहाँ से जनरली कभी नहीं होता। रिकर्सिव ट्रिगर का प्रॉब्लम रियल टाइम पे बताता हूँ मैं तुमको, जब आप मिक्स करते हो ट्रिगर को या तो प्रोसेस बिल्डर के साथ या फ्लोस के साथ, तब आता है तुम्हारा रिकर्सिव ट्रिगर। अब तुमको सुनो, अब तुमको यही सेम चीज रिकर्सिव ट्रिगर के, अभी इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो यही सेम चीज अगर बकायदा में इंटरव्यू में पूछे कि रिकर्सिव ट्रिगर का प्रॉब्लम देखा है क्या, बिल्कुल देखा, क्या बोलना, हैंडल भी किया है, कहाँ पे किया है, तब बताना कि यार एक ऐसा ऑब्जेक्ट था मेरे से, कॉन्टैक्ट ही ले लेना। कॉन्टैक्ट में बोलना, एक जगह मैंने ट्रिगर लिखा था आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट पे, कॉन्टैक्ट पे मैंने एक ट्रिगर लिखा था बोलना आफ्टर इंसर्ट आफ्टर अपडेट पे। एट द सेम टाइम मैंने कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे, मैंने नहीं लेकिन मेरी टीम में से किसी मेंबर ने एक वर्क फ्लो ये बना रखा था, प्रोसेस बिल्डर बना रखा था। ये एक टीम, मतलब एक ही बंदा मैं नहीं हूँ, सब लोग अलग अलग भी काम करते हैं प्रोजेक्ट पे, तो किसी ने एक वर्क फ्लो बना, प्रोसेस बिल्डर बना रखा था। उसका भी जो लॉजिक था वो क्या था, व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड, तो क्या हो रहा था बोलना, सिनेरियो क्या था, इधर मैंने ट्रिगर फायर किया, ट्रिगर ने ट्रिगर ने फील्ड अपडेट परफॉर्म किया, ट्रिगर ने फील्ड अपडेट जो है वो परफॉर्म किया, फील्ड अपडेट होते ही मेरा प्रोसेस बिल्डर फायर हो, प्रोसेस बिल्डर ने क्या किया, फिर से फील्ड अपडेट कर दिया, फील्ड अपडेट होते ही वापस से मेरा ट्रिगर फायर हो गया, ट्रिगर ने फिर से फील्ड अपडेट किया, प्रोसेस बिल्डर फायर हो गया, प्रोसेस बिल्डर ने फील्ड से किया, एंड दिस गोइंग टू बी रिकर्सिव ट्रिगर। ये है रिकर्सिव ट्रिगर का प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर कैसे हैंडल करते तो मेरे ख्याल वो तो अब समझ में आ, क्लियर है।
क्लियर है सभी को? हर संडे शुभम सोहेल जोशना छोड़ के चली गई। ठीक है, यस तो सर। ये, हाँ ये है रियल टाइम, एकदम रियल टाइम का सिनेरियो। ठीक है, चलो। तो आज की असाइनमेंट सॉल्व कर लो। आज शाम में तो जहां तक नहीं लूंगा क्लास में, सीधा कल सुबह ही क्लास लेता हूँ। सीधा कल सुबह क्लास लेता हूँ, सीधा मॉर्निंग में 9 o'clock।